Hello class, I hope you all are fine at your home. Now let us start with the part 6 of the chapter computer software. I know this is a bit big chapter as the content is very wide. Variety of content is there. So don't worry about it. We will finish it out in a day or two. Now, what we have learned earlier before it, we have learned about the device driver. That what is a device driver? Basically, it is a link between the operating system and the devices, okay, so that operating system could communicate with devices. What is utility program which perform a specific kind of task is called an utility program. Examples of utility programs, we have learned about them. First one of them is file management. What it does, you very well know. Virus scanner is used to scan virus. Disk cleanup, it searches and remove the unnecessary files. Next is search utility. What it does, if you have forgot the file where you have kept it, you use this utility to search out that file over your system. Next is backup utility. uh, Backup utility we basically use when we want to back up our data to some other storage, another storage devices. Next is uninstaller. It removes a program as well as any associated entries in the system. File compression, basically it's a utility that shrinks matlab it reduces the size of the files. Next, we have learned about the application software, and in that application software there are two categories. First one is general purpose and second one is specific purpose. Then we have learned about the general purpose software. What are general purpose software? Okay, I have also given you the examples of general purpose software. What are those? Word processing, spreadsheet, presentation and database. Next, examples क्या हैं general purpose software के? One of them is word processing software. You know what a word processor does. Spreadsheet software, you know what it does. Examples, Microsoft Excel and LibreOffice Calc. Next is examples, database software. What is the database software? We used to maintain the database of particular things like this library and information about the school in students in the school. So these database software are used there. Next is presentation software. You know what a presentation software does. It allows you to create documents called presentation. You are seeing on the screen, it's a presentation. Okay, now what are the examples of presentation software? One of them is Microsoft PowerPoint, which I'm using right now, and another is LibreOffice Impress, which you would be using in your computer labs. Next, we have learned about the paint software and image editing software, difference between them. Okay, examples of paint software is GIMP, and example of image editing software is Photoshop. Next, we are going to learn about today is specific purpose software. What are specific purpose software? As the word says, specific matlab specific purpose software are software which are designed and used for a specific set of tasks. They are designed for a specific set of tasks. जैसे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर था तो स्प्रेडशीट में आप अपना अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं, आप किसी और का अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी मेंटेन कर सकते हैं. बट स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर किसी एक पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए बनाया जाता है. अनलाइक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that are designed to carry out common task. ठीक है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कॉमन टास्क कैरी आउट करते हैं. स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड बाय द प्रोग्रामर टू परफॉर्म ओनली अ स्पेसिफिक एक तरीके की टास्क को परफॉर्म करने के लिए. एग्जांपल आपका सबसे इजी एग्जांपल है वेब ब्राउजर. अब वेब ब्राउजर आपका पर्पस क्या सॉल्व करता है? आप उससे वेब सर्व करते हैं, ठीक है, प्लस plus you can see the content of the web. It's the only work of the web browser. You can't do any other thing on that particular web browser. Web browser का वही दो काम है, वही दो काम आप उससे कर सकते हैं. ठीक है, this is an example of specific purpose software. Now next, what are the examples of specific purpose software? Accounting management software. It is the system which is used to meet the need of financial department of a company. किसी कंपनी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की नीड्स को मीट करने के लिए अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है. क्या अकाउंटिंग मैनेजमेंट होती है? जैसे मैनेज ऑफ इनकम, क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है कंपनी के, क्या क्या एक्सपेंसिव हैं, ओके,
और बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं जो कि अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मैनेज करता है और एक एनालिटिकल व्यू देता है उस पर्टिकुलर डेटा का. Next is reservation system software. It is used for online booking such as train, bus, hotel room or any other such type of activities. आप लोग आजकल क्या करते हैं, आपको कहीं जाना होता है तो you use IRCTC website, okay, Indian Railway Tourism की साइट है, you access it out and book the tickets for wherever place you want to go. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, आप अगर बस से भी जाते हैं तो आप टिकट ऑनलाइन ही बुक कर लेते हैं, तो रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर रिजर्वेशन ही करेगा, इट्स नॉट गोइंग टू डू अकाउंटिंग वर्क. ओके. Now, HR management, it is used to manage employees information such as contact detail, benefit detail, performance reviews and much more. HR management, human resource basically. Whatever the people those are working in an organization are the human resources for that organization. जैसे कि एक कंपनी है, and that company there are various number of employees, likewise there is a manager, there are clerks, there are officers. These all are the human resources which a company is using. ठीक है. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या करता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखता है उन एम्प्लॉयज़ की, बेनिफिट्स क्या ले रहा है कंपनी से, उनकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, किस तरीके से काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है या ख़राब कर रहा है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें. ठीक है. इट जस्ट एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज अटेंडेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर. It is used by the companies of all sizes to keep the track of attendance, primarily to pay their wages. Basically, attendance system software use किया जाता है wages पे करने के लिए. This system basically use करने का एक और बहुत ही important reason है, so that the time could be punched on the machine exactly at what time the people are appearing and at what time people are leaving the company premises. Okay, so that their salary could be given according to that only. Next is payroll system. It is used to calculate the salary, bonus, commission, overtime. बेसिक. ठीक है. पेरोल सिस्टम का क्या काम होता है, ये सैलरी कैलकुलेट करता है कि एम्प्लॉयज़ की कितने दिन आया, कितना उसने ओवर टाइम किया, क्या उसका बोनस बना. कुछ कंपनीज होती हैं जो बोनस देती हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, इन्हें कहते हैं इंसेंटिव, कमीशंस देती है कुछ सेल्स पे, ओवर टाइम के लिए अलग से पैसा देती है. तो पेरोल सिस्टम उन पर्टिकुलर चीज़ों को रिकॉर्ड करता है और एट लास्ट उसकी पे बनाता है. सो ह्यूमन एरर भी बेसिकली ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो ह्यूमन एरर को रिमूव करते हैं सिस्टम से. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम. इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है, जो स्टॉक हमारे पास है या जो स्टॉक हमारा बिक गया जैसे. ठीक है. तो वो इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से पूरा होता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ स्टोर. एक स्टोर में किस तरीके एक तरीके के कितने सारे आइटम्स हैं और कितनी क्वांटिटी में वो बिक गए हैं, कितनी क्वांटिटी में वो बचे हुए हैं. तो उसी के हिसाब से नेक्स्ट ऑर्डर कोई भी सेलर होलसेलर को देगा. इट्स द मेन सिस्टम टू कीप द ट्रैक ऑफ आइटम्स दैट आर इन स्टॉक. भाई कम अपनी शॉप को चलाने के लिए स्टॉक खत्म होने से पहले ही तो सामान लाया जाएगा, तो वो कैसे पता चलेगा, इतना ज़्यादा बड़ा बिजनेस है. तो क्या करते हैं, उसके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं. तो कितना हमारा सामान गया है तो हमें पता चलता रहता है डेली बेसिस पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑर्डर्स पोस्ट कर देते हैं. तो हमारा स्टॉक कभी भी ऐसा नहीं होता कि खाली हो जाए. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर सूट. एज द नेम से सूट, a software suite is a collection of two or more software programs that are bundled and sold together. Bundled मतलब एक साथ एक बंडल बना के उन्हें बेचा जाता है. मतलब देर आर 6 सॉफ्टवेयर इन अ बंडल, देर आर 2 सॉफ्टवेयर, 4 सॉफ्टवेयर, 7 सॉफ्टवेयर, 10 सॉफ्टवेयर, देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बंडल्स. ठीक है. और एक साथ बेचा जाता है. अ सॉफ्टवेयर सूट और एप्लीकेशन सूट typically related functionality ऑफर करता है एंड ऑफन शेयरिंग अ सिमिलर यूजर इंटरफेस. और सारे जो उसके 5-6 सॉफ्टवेयर होते हैं एक ही तरीके का इंटरफेस होता है. इंटरफेस मतलब इंटरफेस इज अ वे हाउ वी इंटरैक्ट विद दैट सॉफ्टवेयर. हम कैसे उससे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उसको अपनी बातें बताते हैं. एंड द एबिलिटी टू एक्सचेंज द डेटा विद ईच अदर. साथ में वो सारे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड होते हैं और एक दूसरे के साथ डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ दो आइकन देख पा रहे होंगे, वन इज द आइकन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड वन इज द आइकन ऑफ लिब्रा ऑफिस. दिस बोथ आर software suite. Why? Because these both software include number of software inside it. Likewise,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रखता है, डेटाबेस रखता है, माइक्रोसॉफ्ट ग्रूव रखता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रखता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रखता है एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस बेस वो अपने साथ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लगता है, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस बेस, okay, LibreOffice Impress and LibreOffice Maths and LibreOffice Draw and many more software are there. So they are bundle मतलब एक साथ बेचे गए हैं ये सॉफ्टवेयर, और इनमें एक ही तरीके का इंटरफेस मतलब इनका मेन्यू बार, इनके इंसर्टिंग ऑप्शंस, इनके फाइल मेन्यूज, इनका अपीयरेंस एक ही जैसा रहता है लगभग लगभग। बेसिकली ये आपको सस्ते पड़ते हैं बजाय कि इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर खरीदने के। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस। Now proceeding further to the last topic of our chapter. Now let us, before going to that, let us look at the advantages of the software suite. What are the advantages? One of the advantage, low cost compare to buying each application separately. अगर हम उसी सॉफ्टवेयर की एक एक एप्लीकेशन अलग से खरीदेंगे तो वो हमें एक्सपेंसिव पड़ेगा, साथ में वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। कहते हैं ना, अगर आप रिटेल में कोई चीज़ खरीदते हो तो आपको एक्सपेंसिव पड़ती है एज कम्पेयर टू कोई चीज़ आप होलसेल में खरीदते हो। ठीक है, मतलब कोई आपने 5-6 पीस खरीदे किसी चीज़ के, वो सस्ते पड़ गए, एक पीस खरीदोगे तो वो महंगा पड़ गया। तो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट इंटरफेस फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर। एक ही जैसा इंटरफेस रहता है तो हमें उसको समझने में प्रॉब्लम भी नहीं होती। एबिलिटी टू शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन एप्लीकेशन, सारी एप्लीकेशन आपस में इंटीग्रेटेड रहती हैं, मतलब कनेक्टेड रहती हैं और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट इज आइडियल है पर्सनल यूज़ के लिए भी, प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी, लार्ज या फिर स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी, हर तरीके के पर्सन और हर टाइप का इंडस्ट्री इसे यूज़ कर सकती है सॉफ्टवेयर सूट को। नाउ नेक्स्ट प्रोसीडिंग टू अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज रजिस्टर और एक्टिवेटिंग द सॉफ्टवेयर। अब रजिस्टर और प्रोडक्ट एक्टिवेशन से पहले लेट मी गिव यू अ स्मॉल ग्लैंस। वाइल जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो या फिर खरीदते हो तो वो आपको दो प्रॉम्प्ट देता है इंस्टॉलेशन के बाद। क्या? या तो उस प्रोडक्ट को रजिस्टर करो रजिस्ट्रेशन की के थ्रू, ठीक है, या फिर उसे एक्टिवेट करो। रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन दोनों अलग अलग स्टेप हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी डिटेल्स देनी होती हैं और प्रोडक्ट एक्टिवेशन में आपको की देनी होती है। बेसिकली अगर आप प्रोडक्ट एक्टिवेट भी कर रहे हो उस टाइम भी आपको सारी डिटेल्स देनी होती है अगर आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में आता है, वो एक्टिवेशन की प्रोसेस में नहीं आता। नाउ लेट अस सी रजिस्टरिंग क्या होता है। रजिस्टरिंग द प्रोडक्ट अकर्स व्हेन यू हैव पेड फॉर द लाइसेंस एंड हैव रिसीव्ड द प्रोडक्ट की। द प्रोडक्ट की गिव्स यू द लीगल राइट टू यूज द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू यूला कहते हैं इसे हम, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। प्रोडक्ट की इज यूज टू अनलॉक ऑल द प्रोडक्ट फीचर। जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, वो आपको कहते हैं ना 30 डेज का ट्रायल है या 15 डेज का ट्रायल है, तो जब आप उसकी प्रोडक्ट की उसमें पुट करते हो, एक्टिवेट करते हो उसे, तो उसके सारे फीचर्स खुल जाते हैं। क्योंकि डेमो फीचर में कंपनी कभी भी अपने सारे फीचर्स नहीं देती है, कुछ फीचर्स देती है ताकि कस्टमर को वो अच्छा लगे और वो उसे परचेस कर ले। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एक्टिवेशन। प्रोडक्ट एक्टिवेशन डिफरेंट है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन से। एक्टिवेशन रिक्वायर एंड इंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन मोर देन द लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम्स अलाउड। देखो, हर प्रोडक्ट की एक कैटेगरी होती है कि ये इस की से 3 सिस्टम्स में चलेगा, 2 सिस्टम्स में चलेगा या एक सिस्टम में चलेगा। तो व्हेन यू आर कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट एंड यू हैव इंस्टॉल्ड दैट सॉफ्टवेयर विद दैट पर्टिकुलर की, तो इट इज कनेक्टेड विद द सर्वर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। एंड क्या होता है, वो वेरीफाई करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं दो पीसीस पे एक ही की से सॉफ्टवेयर चल रहा है। अगर ऐसा होगा तो जो लास्ट में रजिस्टर हुआ होगा उसको वो डिसेबल कर देगा। तो दैट इज पर्टिकुलरली प्रोडक्ट एक्टिवेशन फॉर, सो दैट कि फॉर्जरी रोकी जा सके। द एक्टिवेशन प्रोसेस टेक्स ओनली फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज ईमेल एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट, बिकॉज वो ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में दे चुके होते हैं। सो हियर विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी एंड अवर चैप्टर। नाउ let us proceed further towards our exercises of this particular chapter on page number 10. And let me make you solve the exercises. Let us self-evaluate what we have learned till now. I know that software or program consists of series of related instruction organized for a common purpose that tells the computer what tasks are to be performed and how to be performed. Yes, यही एक काम होता है। इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड इंस्ट्रक्शन की सीरीज होती है जो कि
बताती है कंप्यूटर को क्या परफॉर्म करना है और किस तरीके से परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, I know that system software is a computer software that is designed to operate the computer hardware and to give and maintain a platform for running the application software. Yes, system software जो होता है डिज़ाइन करा जाता है इस तरीके से टू ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर, सारे हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, टू गिव मेंटेन अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, operating system is a software program that enables the computer hardware to communicate and operate with the computer system. Yes, हमने पढ़ा है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कम्युनिकेशन का एक गैप ब्रिज होता है जो हार्डवेयर और यूज हार्डवेयर और नाउ operating system is a software program that enables the computer and hardware to communicate and operate with computer software. Yes, operating system ही एक bridge होता है जो hardware और software के बीच में communication के gap को fill out करता है. Next, I know that application software consists of program designed to make user more productive and assist them with the personal task. Yes, application software इसीलिए होते हैं कि वो डिज़ाइन करे जाते हैं यूज़र ताकि प्रोडक्टिव रहे और असिस्ट कर दे उन्हें छोटी छोटी पर्सनल टास्क में। I fully know that special purpose application are the type of software created to execute a specific task. हमने अभी पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक टाइप की टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन को प्रोग्रामर डेवलप करता है. Yes, then it is also true. Please, why I am telling you these particular self-evaluation points, they can come in the form of exercises or question answers in your examination. So be attentive while listening to them. Now proceeding further, pick the correct answer. A software program that enables the computer hardware to communicate and operate with the computer software is operating system. हमने अभी पढ़ा था ये self evaluation में, that is true. Operating system लिखना है यहाँ पे आप लोग. Dash is a type of system software that perform a specific task usually related to managing a computer. Utility softwares कहते हैं कि सिस्टम कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर पाए. Now next, a utility that protects the computer against the virus by identifying and removing any computer virus. अभी utility program में पढ़ा था कौन सा होता है? Virus scanner. Dash program make user more productive and assist them with the personal task. कौन से होते हैं? दो तरीके के होते हैं सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और कौन से होते हैं? चलो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो डैश प्रोग्राम मेक्स यूजर मोर प्रोडक्टिव एंड असिस्ट देम विद द पर्सनल टास्क. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो असिस्ट करते हैं पर्सनल टास्क में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम? राइटर. अभी पढ़ा था एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, राइटर था और एमएस ऑफिस वर्ड था. Next, a presentation in the presentation software PowerPoint is called a slideshow. Yes, you are seeing a slideshow and I am recording audio into it. That is a slideshow. A copyright software that is distributed free of cost for a trial period is called a shareware. From the very beginning of the chapter, we have learned about the shareware. Now proceeding to the true and false. Now here what you have to do, you also have to correct the statements. Okay, question would come in the form of correction of the statements. A, computer cannot work without a software. True, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं वर्क कर सकता. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मस्ट इन एवरी कंप्यूटर. ट्रू, विदाउट it how we are going to interact with the hardware. Adobe Photoshop is an image editing software. True, अभी पढ़ा था लास्ट में. Window is a utility program. False, Window is a operating system software. Okay, Window is not a utility program, utility software. Now E, most of the application software are available as a freeware software. Yes, there are many applications, there are application software that are available to free of cost. Next, both Mac OS and Linux are open source software. False, and Mac OS open source नहीं है. You have to buy it from Apple. Only Linux is an open source software. Open source software कौन से होते हैं? जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं और साथ ही साथ आप इनमें चेंजेस भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में एज पर योर रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट इज क्रोमबुक इज ए स्पेशलाइज्ड लैपटॉप दैट रन क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम. ट्रू. एक और चीज़ थी इसमें, क्रोम बॉक्स. क्रोम बॉक्स क्या था? डेस्कटॉप वर्जन इसका. नेक्स्ट, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड्स इन द रैम चिप्स.
False. Mobile operating system resides in the ROM chip, read-only memory chip, not in the RAM chip. Next, now the last exercise of our chapter, that is filling the blanks. Dash consists of a series of related instructions that tells the computer what tasks are to be performed and how to be performed. Software question repeat होते हैं, but you have to know them. Dash software is a copyright retail software that is available in the retail stores or on the internet. पैकेज सॉफ्टवेयर होता है जो कि कॉपीराइट होता है प्लस एज वेल एज रिटेल स्टोर्स में भी और इंटरनेट पे भी अवेलेबल होता है. Dash is a utility in Windows that searches and removes unnecessary file. अभी पढ़ा था. Disk cleanup होता है जो कि unnecessary files को remove कर देता है सिस्टम से. Dash is designed to operate the computer hardware and to give a platform for running the application software. कौन से होते हैं? System software. Dash is a process in which computer loads operating system from hard disk. That process is known as booting. Dash developed by Microsoft is a mobile operating system Windows Phone. ये basically outdated है, अब discontinue कर दिया Windows में, but as per the book we are going to place the answer here, this only. Dash is a voice recognition app in Apple iOS, that is Siri. And at the last, an operating system that works on a desktop computer is a standalone operating system. उसे हम standalone operating system बोलते हैं. Now with the end of the filling the blanks, we have completed our exercises as well as our chapter. Tomorrow I would be giving you today only I would be attaching as an assignment your question and answer, and you have to do them by the next class. Okay, you have to attach them back to me so that I could check them out positively. Thank you. Stay home, stay safe.